Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Rusairam. In this video, we will cover the computer class 9 guest paper, the most important questions from both categories, short and long. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपकी बुक के टोटल 5 चैप्टर्स हैं और हम चैप्टर वाइज इनके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स को डिस्कस करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा अर्सा पहले पेपर पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो काइंडली आप पेपर की प्रेपरेशन करने से पहले लाजमन उस वीडियो को देखें। और अब हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन फ्लो चार्ट, सेकेंड इज़ राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय planning of solution, fourth is write the purpose of set symbol in the formulation of algorithm, fifth is what is meant by input and output requirements of flowchart, next is if there are so many solutions of problem, how do you choose the best solution, next is write 3 advantages of flowchart, write 3 disadvantages of flowchart. What are 5 words? Next is what is test data. And the last question from the chapter number 1, which is most important, differentiate between the verification and validation. Dear students, नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने सबसे पहले जब भी आपके पेपर में कोई भी डिफ़ाइन आता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपका जो है 1 मार्क्स डेफिनेशन का होता है और जो दूसरा नंबर है वो आपकी एग्जाम्पल का है। तो पेपर करते हुए लाजमन अगर आपके शॉर्ट के रिलेटेड कोई पॉसिबल एग्जाम्पल बनती है तो आप लाजमन उसको राइट करें। अगर आप लिखेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ 1 मार्क्स ही मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। द फर्स्ट शॉर्ट इज़ डिफाइन नंबर सिस्टम, नेक्स्ट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द बिट एंड बाइट, थर्ड इज़ व्हाट इज़ ट्रुथ टेबल, फोर्थ इज़ व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिफ्थ इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोपोजिशन, next is differentiate between the temporary and the permanent storage, next is what is storage device, next is what is ASCII, second last question from the chapter number 2 is what is not operator। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑपरेटर के टॉपिक में से तीनों की डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेना है, आइदर इट्स अ नॉट और एंड, तीनों को। Last question from the chapter number 2 is how many types of logical operators are there? Name them. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। द फर्स्ट शॉर्ट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, नेक्स्ट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, थर्ड इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, fourth is differentiate between the sender and receiver, fifth is what is protocol, sixth is what is HTTP, next is what is SMTP, next is what is routing process। dear students, routing process से पहले एक definition आती है what is router, आप लाजमन उसको भी prepare करें। next is what is message, what is the difference between the static and the dynamic IP, next is define transmitter, second last question from the chapter number 3 is what is called the port number, and the last question is what is FTP। Now we will discuss the chapter number 4 most important short questions, and the first question from the chapter number 4 is define piracy, next is define some data security issues, name
नेम्स आपने बताने हैं डाटा सिक्योरिटी इश्यूज के. थर्ड इज व्हाट इज सॉफ्ट लिफ्टिंग. फोर्थ इज व्हाट इज फिशिंग. सिक्स इज व्हाट इज सैबोटेज. नेक्स्ट इज व्हाट इज साइबर क्राइम. हु इज हैकर. व्हाट इज विगनर सिफर. Name the types of software piracy. Define encryption. What is DOS? And the last question from the chapter number 4 is write any three characteristics of good password. Now we will discuss the last chapter, most important short questions. First question is what is meant by anchor. Next is what is hyperlink. Third is differentiate between the ordered and this unordered list. Fourth is write features of HTML tags. Next is what are singular tags. Next question is what is hypertext. Differentiate between the header and body. Which tag is used to write a paragraph? And the last question from the chapter number 5 is what is nested list. डियर स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो के लास्ट सेक्शन को देखते हैं जिसमें आपकी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आपकी फुल बुक के चंद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. आपने पेयरिंग स्कीम से को फॉलो करते हुए इन लॉन्ग क्वेश्चंस को लाजमन प्रिपेयर करना है. द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ class 9th computer science is define problem analysis. Explain your answer with an example. Second is define an algorithm. Argue on its role and importance in problem solving. Third is how do you determine the requirements for a flow chart. Next is define flow chart and make a table of its symbol and their uses. Next is explain the types of test data. अब आपने types को लिखने से पहले इसकी definition लाजमन लिखनी है, फिर आपने heading देनी है types of test data और next further आपने जो आपकी बुक में गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग इसको राइट करना है. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट अल्गोरिथम. अब लिमिटेशंस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस को भी कहा जाता है. तो आपने दोनों फ्लो चार्ट और अल्गोरिथम दोनों के एडवांटेजेस भी कर लेने हैं और डिसएडवांटेजेस भी, फ्लो चार्ट और अल्गोरिथम दोनों के. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल. Next is what is the network topology? Describe its types of topologies. What is TCP IP? Describe its 5 layers with their functions. What are the sizes of IPv4 and IPv6? Explain the method to calculate the size of both standards. Next question is write a note on the need of computer networks. Next is explain ciphertext with different examples. Next question is why do you require an installation key while a software is protected by a password. डियर स्टूडेंट्स, आपका एक यहाँ पे एक और भी लॉन्ग ऐड होना था कि जो पासवर्ड गुड पासवर्ड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपने उसको भी लाजमन प्रिपेयर कर लेना है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ साइबर क्राइम. एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मॉड्स. Next is what write a note on phishing attack. Next is explain routing process in detail. Next is define computer network model. Explain its any 3 type. Next is what is meant by encryption. Explain the importance of encryption in daily life. यहाँ पे encryption के जो spelling है उनमें थोड़ी mistake है. Next is why we use data in coding. Also write any 3 data security issues. आपने 3 data security issues जो हैं उनको explain करना है. Next is what is the data communication. Explain components of communication system. जो आपकी बुक पे mention सारे components हैं आपने इन सबको explain करना है. The last question is analyze the personal privacy and security concerns that arise with the use of computational systems.
Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. Inshallah, in the next video, I'll also discuss the most important MCQs from the past papers and also from the book exercise. So stay connected, stay tuned, and thank you so much for listening me.